Hello friends, I am Ratnadeep. Welcome to my channel. If you are new to my channel, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon, because in my channel you will get to see many type of sensors, variety of shields, DigiClock, line following robots, etc. So if you do not want to miss it, please subscribe so that you can get notified. पिछले वीडियोस में मैंने 8 इमेजेस बनाए थे, उसको सेव किया था और एक के बाद एक जल रहा था, तो लग रहा था कि एनिमेशन हो रहा है. In this video, at first I am making 2 images and saving it. Let's see how the animation looks like. Okay, now I am increasing the size of the circle. Here I am making 4 images and saving it. Okay, let's see now how the animation looks like. Now I am taking a square and also controlling the brightness on increasing and decreasing the size of the square. मतलब जैसे जैसे मैं स्क्वायर का साइज इंक्रीज कर रहा हूँ उसके हिसाब से उसका जो ब्राइटनेस का लेवल है उसको भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, और स्क्वायर का साइज डिक्रीज करने के साथ मैं ब्राइटनेस का लेवल भी डिक्रीज कर रहा हूँ, तो ताकि देखने में अच्छा लगे, एनिमेशन अच्छा लगे देखने में. At last I am merging with brightness control, scrolling control of 9 set of images. First image is emoji type, second image is word scrolling, rest of the images are letter scrolling in upward, downward, right, left directions. मतलब मैं यहाँ पे 9 इमेजेस सेव करूँगा, ठीक है, तो 9 इमेजेस एक के बाद एक जलेगा. तो पहला इमेज जो है वो है एक इमोजी टाइप, सेकंड इमेज जो है वो है वर्ड स्क्रॉलिंग. तो इसमें मैंने जो वर्ड लिखा है वो है रत्नास, तो वो रत्नास पूरा का पूरा वर्ड स्क्रॉल करेगा, ठीक है. तो 2 इमेज हो गया, और बाकी जितना भी इमेज बचा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, वो सारा का सारा लेटर स्क्रॉलिंग होगा. जैसे कि मैं रोबोलैब का R ऊपर स्क्रॉल किया, उसके बाद O दाएं स्क्रॉल किया, उसके बाद B नीचे स्क्रॉल किया, फिर O, फिर लेफ्ट साइड स्क्रॉल किया. ऐसे करके मैं पूरा का पूरा रोबोलैब का वर्ड का हर एक लेटर को मैं स्क्रॉल किया अपने मनपसंद से. Thanks for watching. We will meet soon. Till then, bye. Take care and Jai Hind.